In the land of Kalakol, the first kingdom, there lived the forefather Ling Sonam and his wife. They made a little field and sowed some seeds in it. From the seeds they received a rich harvest of wheat, barley and peas. One day in autumn the forefather saw something strange. All the grain had turned into worms, and right before his eyes the worms started eating one another, and soon only one huge worm filled the barn. Slowly this huge worm transformed into a beautiful child. The forefather was a little scared. He went to a hermitage, and the diviner there told him, "The child is very special, take him home and call him Dongsum Mila Songmo." Soon it was time for Dongsum Mila Songmo to get married. Once again the forefather went to the diviner for advice. "You will have to bring him 18 brides born under the sheep sign." The diviner said, "The brides will give birth to 18 heroes who will establish the land of the Ling, where the great King Kesar will be born." Taruz na thugna, boruz na thugna, khiruz na thugna, machi na thugna, khesh kena lo chingi sum sakpa kyungan mana saden to sta bungbu khi wase shamku chi tana dik mana ta so chob gyalla ming pokhres ta kan kyong ju cho chob gyalla so chob gyal ske kontan kena ming police sanam khres te gara te pota se ta sia kena lo go khres kan to buna dumbu tas ya ju kena ming takse kheres ta na dik ming pokhres ta kan kyong ju cho chob gyalla so chob gyal ske kontan kena ming police sanam khres te gara te pota se ta sia kena lo go khres kan to buna dumbu tas ona mana tait na yo chukrang de rena re khor ming oche ming chob gyat so chob gyalla de las gani ka margal khan po nganmo na nga limpa gona lagwa ta de na je ju azarbana awni de chuk tas pa kena sas bertar na sa thap tun thap ta chuk las gani kena las de tunduk thale se chu chani skat purang solorena buthaji lix pari so alabang da thang so ta tholon molang tanas mulu sen chi tulum se da som so la tholon mola onas mulu sen chi tulum se das mux pa zeler narik sunangala ngiran kyun chi ga so la गलम केसर जो है एक बड़ा सा पेड़ है पेड़ को अशान शाखीन थे एक शाखीन ये है उसको वो होता है दर्पण बोलता है उसका नाम वो एक है एक शाख दूसरा बोलता है पाले वो भी एक शाख है उन वो एक शाखीन में होता है 10-15 कैसेट बढ़ता है उसका कहानी पूरा होना चाहिए ना बाकी उर्दू में है तारीख में अकबर बादशाह सिकंदर बादशाह जहांगीर बादशाह उसका कहानी है ना जनाब वही जैसा है तारीख तो कितना वक्त लगता है पूरा मुकम्मल करने से 45 घंटा लगता है सुनो उस वक्त हमारे बाप जो है बहुत ज़बरदस्त था उसको याददाश्त था दादा को भी याददाश्त था दादे का याद बाप को आया बाप का याद हमको आया
तो आप अपने बाप के साथ जाते थे सुनने? जाता था। कहाँ? जाता था। यहाँ हमारे गांव में 15 आदमी 20 आदमी जमा होते हुए हर वक्त जाड़े के मौसम में 3 महीना हर वक्त जमा करते हुए सुनाता था। तो उस वक्त हमको याद आया, बाप के साथ जाने से याद आया, नहीं तो कहाँ से आएगा मुझे। तो वो कुछ देते थे उस वक्त आपके बाप को? कुछ देता था। क्या? वो देता था। वहाँ उन्होंने सब जब होकर एक दिन बकरी करता है, करता था, खर्चा खाता था। दूसरे दिन 3-4 मुर्गी लाकर करता था, उसको देता था। जाते वक्त उसी वक्त 5 रुपया 10 रुपया देता था जमा करते। उस वक्त 5 रुपया 10 रुपया अमीरों को नहीं था। Kesar, I think, is many things. It is basically an epic which tells the story about a God who dies in the heavens, comes down on earth, is reborn, and then goes about setting order from chaos. And so, which is endemic to all epics, almost all epics. And so it is the story of his exploits, shall we say, in various parts of the Tibetan-speaking world. When it was time for Kesar to be born, a voice spoke to Gobzang Lamo from inside her. Mother, I shall be born on the top of 3 hills. Go there and build a house with 3 stones and 3 beams. Take coral sticks and pearl white twigs and cover the roof with butter and flour. This the mother did, and the voice said again, You are a strange woman. Am I a dare child that I'll be born in the hills? Go to the shore of the lake and build a similar house. She did so, and again the voice said, You are a strange woman. Am I a fish child that I'll be born on the lake? Then she was told to build another house where the 3 valleys met, then another one in the middle of the field. After that she was sent behind the door of her house, and then to the elevated place in her house, and finally the voice said, Now bring an offering of food and pencil cedar. Together with me many creatures will be born. I first heard the story of Kesar in 1993 while traveling through Ladakh. Kesar, I was told, is like the mountains of Ladakh, continuous and unbroken. Ever since, I have been traversing these mountains, feeling the scorching sun, the arid air and the chilly nights, looking for storytellers who could narrate the Kesar. I have found many hidden in these valleys. By now, I have recorded over 100 hours of their narration. On a cold December morning in the year 2000, I set out for Wanla in search of Kunchuk Sarpul. I was accompanied by Akbar, who is my friend, guide, driver and interpreter in Ladakh, and a small digital camera. We met a shepherd who became our guide.
Kunchuk Sarpun lived on top of a mountain. After trekking for more than 8 hours, we reached his house, completely exhausted, hungry and thirsty. Acha, Goncha acha. Kesar yang mana sebenarnya apa mana yang dilut kan dapat kan Ya di sini no. zoom sih tu lah. Ya. Akhirnya kan zoom sih tu tado. Sebenarnya mana tetenas kalpatanas. Di sini kya? No, dis. Akhirnya du cacar samen zoomen sih dukjas. Te tamdawana diring namna ko hawa nang yang bozum chazri ni patal hungpo nang yang bo. Hungpo nang yang bozum chenzri ni godi rooms po. Ngan ma. Nganne mi sirau. Ya lah kira cizen do kira ni patane derung sakpa. Patane het. Oh ne da do kiri joskal gon jokta. Ni kesar gelpun ko ngoma tan. Diringa thomi ko ngoma tan ni duksin so. Alta kira ngo masjid na kira thomi tan lao se na nganna. Kiri na me so. Ko go jo sin kira kalkulu so se. Chisha mi da de rala rule go chen. जब बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है तो उसके लोरी के तौर पर केसर का ही लोरी गाया जाता है और बच्चे को केसर मानते हैं। अरे तुम बच्चे नहीं हो, तुम तो केसर ग्याल्पो हो। और जिस तरह केसर ग्याल्पो को अनेकुर्मन ग्याल्मो ने लोरी सुनाया था, तो उसी तरह हम आपको भी तुमको भी लोरी सुनाते हैं।
अभी आपने ये जो गाना देखा वो है ख़ास केसर के बारे में गाया गया है, जिसे हम गिंगलू बोलते हैं। केसर का जो वो ट्रेडिशन है, केसर जो कहानी हम बताते हैं, जो स्टोरी टेलर्स जो हैं वो गाना गा के ज़्यादा नरेटिव फॉर्म में है, और इसके साथ साथ जो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ऑडियंस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गाते ज़्यादा हैं, और हर सीन को वो एलोबरेट करते हैं गानों के साथ। When Kesar was born to Gobzang Lamu, many became jealous. She was ostracized and made to leave the village. So the child Kesar grew up as a beggar boy, a mischievous vagabond. He wandered through the mountains. One day he met the beautiful maid Duguma. She was the daughter of King Yapstamba. She invited him to her engagement feast, where she was to choose her husband. So on the grand occasion, the boy went to Duguma's palace. केसर चोचोडू के लिए मतलब वो स्वयंवर जिसे बोलते हैं के लिए गए थे, तो यापस्तोनबा और युमस्कोनमो जो चोचोडू का पेरेंट्स हैं, उन्होंने बोला भाई जिस किसी ने अगर चोचोडू चाहिए तो वो खुद चोचोडू ही सेलेक्ट करेगा, तो आ जाइए सारे। तो दूसरे दिन आते हैं, बंदा होरी गल्पो मते दागी गल्पो या नक्सिस की गल्पो, पता नहीं कितने कितने राजा और महाराजे घोड़े पे बैठ के अपने आप को बहुत अच्छा बन के और ख़ूबसूरत बन के, बहुत ही बहादुर बन के आते हैं। तो चोचोडुगु और उनकी सहेलियाँ आगे बैठे हैं खतक्स लेके, और वो लोग गा रहे हैं पुंपायास पे काना इमाशारे पुंपायो में काना दवाशारे। तो चोचोडुगु ऐसा गाते हैं, भाई ये ऐसा है, वहाँ से कोई लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहादुर है, उसके देखने में तो बड़ा हीरो लगते हैं, मगर ये मेरे लायक नहीं है, तो छोड़ते हैं सब उनको। तो लास्ट में केसर आते हैं, तो उसके वो घोड़े के लगाम को पकड़ लेते हैं, तुम ही हो मेरा फीचर। The elders and Duguma's parents were shocked. Our beautiful Duguma cannot marry a dirty beggar boy. So they organized various competitions, all of which the beggar boy Kesar won. Finally, it was decided to hold a horse race on a glass surface. The winner shall be Duguma's husband. Kesar summoned his divine horse, Kengjongnyerpa. We have to win this race. Kengjongnyerpa replied, do not worry, great King Kesar. In one night I can cross rivers and mountains which would otherwise take 50,000 years to cross. But I have not eaten for many days. Feed me a big bowl of gruel made from barley and grass. As the first rays of the sun touched the earth, the race began. The sound of thousands of hooves shook the earth. A great cloud of dust swirled in the sky. Kesar stood where he was. When the sun was high in the sky, he spurred his horse and they rose into the sky. With one leap, Kesar reached the finishing line. Slowly the other riders arrived, their fine clothes, turbans and crowns dripping with horse dung.
Kesar's horse had emptied his bowels as he passed over them. The riders felt ashamed and accepted the beggar boy as the winner. Kesar is not a heroic epic in the classic sense of that word, where this person pulls out the sword and conquers everybody and is the whole time, sort of on a stage with rippling muscles or something like that. He is not a Herculean hero in that sense. No, Kesar is Kesar as hero. He is Kesar as a priest. He is Kesar as a human being living everyday life. And he's also Kesar as a healer, and mostly, or not mostly, but a good portion of the time, he's Kesar as a trickster. So yes, there is that element of many aspects to his life. There is a episode where Kesar, in his early life, he lives very much in disguised form. And I think it was soon after his marriage, he finds this very difficult to contain anymore. So he goes off into the valley, and there's a storm in which he's wrapped up, and then he suddenly becomes revealed as Kesar. And it is as if he reveals to himself that he is Kesar. He needs that reassurance. And that is, to me, that's a tremendous scene, because it is where you are confronting yourself spiritually. Of all the storytellers I met, the most enjoyable is Appo Jafar. It was he who introduced me to Kesar and became the inspiration for this film. His village Chiktan is famous all over Ladakh for its rich oral tradition. From all accounts, he may be its last surviving professional storyteller. अगर केसर का आसान किसी को पूरे याद है तो मेरे से मिलने दीजिए। इनाम आपसे क्या मैंने देगा उसको, बोला ना। बच्चे को भी सीखते हैं, बच्चे इसको याद नहीं रहता है। हाँ जी, ज़्यादातर सबक पढ़ते हैं ना, इसीलिए स्कूल पर जाकर सबक को याद करता है। अभी स्कूल जाकर ज़्यादा तालीम पढ़ने वाला हो गया ना, जब ये तकरीबन रवाज या ख़त्म हो गया। हाँ, इस अंग्रेज़ी उर्दू हिंदी सब अभी सब जोर से पढ़ते हैं ना, इसलिए वो पुराना बातें जो है वो याद नहीं करता है, सिखाता भी नहीं, वो कहने वाला भी ज़्यादा नहीं। Yes sir, yes sir. 3 spoon. 1 for my master, 1 for my master, 1 for my dam, 1 for my dam, 1 for the little boy, 1 for the little boy. Who lived on the land, who lived on the land. Twinkle, 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 little star, how I wonder, what you are, what you are. Fatima, Bali, Khatun,
अगर इल्म नहीं हो तो सारा कोई चीज़ भी नहीं होगा। इल्म बड़ी दौलत है बोलता है, इसलिए दौलत है भी है। आपका क्या ख्याल है ये जो ये जैसे केसर की कहानी है, अच्छा जी, ये इल्म नहीं है? हाँ, ये भी इल्म नहीं है? ये भी पुराना तो इल्म है, लिहाजा वो अभी चलता नहीं। वो किताब निकालने के से तो चलता है, और हर किसी ने किताब नहीं निकाला, इसीलिए वो हमारे पहले बुजुर्ग की बातें तो है, अभी यादगार नहीं रहता है ना, किसी को भी यादगार नहीं, इसलिए इसका कदर सिफात नहीं जानता है। इसका कदर सिफात वो पढ़ने वालों को, इल्म याद होने वालों को मालूम होगा। या It is my piali boat and I will aim on the main point. Broken. I lost broken. कोई और मिलेगा ऐसा? पहले ज़माने के ये हमें यही बनाता था होलल, जो चिड़िया कबूतर चकोर जैसे पकड़ते थे, भेड़ बकरियों को देते थे। जो हम पहाड़ी पर भेड़ बकरियों को जाते हैं, इस वक्त ये ज़रूरी है इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि किसी जगह पर लुमड़ी भी आता है, भेड़िया भी आता है, उसको उड़ाने के लिए भी हमें ज़रूरत है। वो केसारे में उठाता था हर वक्त, हाँ, वो जादू के साथ भी उठाता था, निकाल के भी उठाता था। ये बताइए केसर की क्या क्या कुछ निशानियां हैं यहाँ? केसर की, हाँ। के यहाँ को तो नहीं पहाड़ पर है, हमारे यहाँ पहाड़ पर भी है, वहाँ भी है, मैंने कहा ना, हाँ। वहाँ लमसू में भी है। क्या है? हाँ, लमसू में है उसके घोड़े का नक्शा, हाँ, पूरा रखा है उधर। वो हमारे वहाँ ऊपर हिंदुम बोलता है, बड़ा ऊंचाई पहाड़ है, वहाँ पर एक बड़ा सा खेत है, खेत में बड़ा गोल पत्थर है, उसने वहाँ से को फील दिया था बोलता है। हमारे सुनने में केसर जैसा उस वक़्त कोई भी नहीं था। 18 बादशाहों में से वो अच्छा था। 18 बादशाहों पर उसने हुकूमत किया, तो किसी न किसी दिन वो क्या नाम, वो दूर से आ रहा था, और दूर से आकर गार नहीं किया, वो एक मैदानी जगह पर, वो चंपाल होता है ना उधर, गुजर बकरवाल, जैसे उन्होंने बहुत भेड़ बकरियाँ, हज़ारों से ज़्यादा है ना, लाखों करोड़ों उनको भेड़ बकरियाँ आता है, वो पालने के लिए वो आदमी भी जाता है ना, एक बूढ़ा आदमी शाखर जाता था चांसा वाला, तो उसने इम्तिहान के लिए केसर ने क्या भेड़िया बन के उसके भेड़ बकरियों को इस तरह से छलांग मारा, तो उसने गोफीन दे दिया भेड़ियों को, बोलता है यार से गोफीन मारने से भेड़िए के इस चेहरे पर लग गया, बोलता है हो गया तो भेड़िया मर गया। तो उसी वक़्त का हमारे फूल फेरे की मिसाल है, गलम केसर भेड़िए बन के जाता था ना, गलम केसर भेड़िया बन के गया, तो भेड़िए के सर पर पत्थर लग गया, भेड़िया मर गया, तो केसर भी मर गया, बोलता है। हाँ, एक सवाल में, हाँ, और एक दूसरा सवाल में केसर मरा हुआ नहीं, वो अभी भी है, तो उसको बोलता है हमारे ज़बान में गलम केसर दुनिया फिरने वाला आखिर में फकीरी के साथ मर गया, बोलता है। Kesar became the king of Ling, and Duguma his queen, and they started living in the magnificent Ling castle. Order and peace were established all over the land. After 3 years, Kesar went to the cold valley to meditate. He'd been there for 1 year when his celestial aunt, Ane Kurman, appeared. Kesar, the demon of the north, is creating havoc. The time has come for you to go to Dudiel and fight him. So early next morning, Kesar in full armor set out for Dudiel to destroy the demon.
Surmounting many trials, Kesar rode his divine horse into the courtyard of the demon's castle. The demon's enchanting wife was alone and surprised to see a handsome warrior at her gate. Kesar smiled and sang her a song. O Queen Bumsia Bumskid, you are more beautiful than the smile of the moon. I am Kesar, King of Ling. I have travelled a great distance to meet you. Bumsia Bumskid was charmed and opened the door for him. She hid Kesar in a pit beneath the floor. Late at night the demon returned and lay down to sleep. Kesar came out with his poisoned knife. The demon woke up and recognized Kesar. He implored him to spare his life. I shall be your servant and give you my warm land where you can live in winter. Kesar withdrew his knife, but Ane Kurman, his celestial aunt, admonished him. So with one stroke he cut the demon's body into 2 halves and buried them under a large stone. The demon's wife Bumsya Bumskid then pleaded, O great King of Ling, you have destroyed the demon. Now please drink this cooling wine. She served him the potion of forgetfulness, which Kesar drank in one sip and forgot all about the land of the Ling. Not more than 100,000 people live in Ladakh. Almost half of them are Buddhist and the other half Muslim. Islam came to Ladakh in the 16th century. It is difficult to establish when Buddhism was introduced here. Ladakhis believe that Buddhism came to Ladakh first and from here traveled to Tibet. This 9-meter tall sculpture of the Maitreya, the future Buddha, is evidence of the passage of Buddhist missionaries through this region during the 7th and 8th century. But if you were to ask what was the cosmology of the Kesar, it seems to represent very much a pre-Buddhist shamanic sort of world. It has the realm of the heavens and then the realm of the underworld,
and then the realm in between, which is also known as the realm of human beings or men. So these are the three realms it is divided into. As I'm sure you know from having read the Kesar, that it has many shamanic elements. The hero and many other characters in the Kesar change forms very easily. Can become human beings one day and then animals the next day, a bird the third day, and so forth. The Tibetan, the scholar claim that they had civilization, they had tradition, they had culture before the introduction of Buddhism in Tibet in 7th century AD. They had this shamanistic system. That Onpo system is very much practiced in Ladakh. In almost for 3 to 4 villages we have one Onpo, and the Onpo has its own ritual, its own text, which is entirely different from that of Buddhism. Mago is getting Jingdang Tongye Dio Gindun Laskuru. वो हमारा आलम है। जिस किसी को थोड़ा बीमार आता है ना, इसीलिए इसको ये यहाँ निशान लगाता है तो ये साफ होता है। हाँ, ये आलम बोलता है हमारे उर्दू का, मौलवी का आलम है। अब बुद्धिस्टों का छत पर भी रखता है, मने पर भी रखता है, वो चोटी पर भी रखता है। हाँ, उनका भी कहता है यही है। इस केसर की कहानी में ऐसे सब चीजें हैं? हाँ जी, केसर की कहानी में भी है। ये अलम मलम है? हाँ हाँ, है। कहाँ? पूरा कहा है वहाँ पर। क्या कहा है? जिस किसी ने उस पर जो अपना हमारा जो उम्र जो है ना ऊंचा रहे, सब रहे, रहने के लिए उन्होंने तरसुक बोलता है बुद्धू ने, तरसुक उठाता है। इस तरह हमारे मुसलमानों ने इस तरह से ये आलम उठाता है। हाँ, ये है हमारा। क्यों नहीं, हमें बोलता है तरक्की हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए, बोलते हैं ना, इसी तरह हमारा उम्र भी तरक्की हो जाना, सब रहना, अच्छा रहने के लिए ये उठाता है। In the meantime, the king of Hor sent his 2 wise ravens to find him a suitable bride. They soon returned. O great king, in the land of the Ling dwells Dugama. She is beautiful, her upper half golden, the lower half turquoise. Her husband Kesar is lost in the demon's land, and all the 18 heroes have gone to the cold valley for sport. Now is the time to attack Ling. The king of Hor attacked Ling castle. Duguma took up arms and fought bravely. Shankaromiru, who was the head of the Hor army, came to her and said, "Since Kesar has been away for so long, I beseech you to marry our king." Duguma replied, "Your king will have to pass many tests before I will come with you." She asked the king of Hor to bring her a wild yak, and then she asked for a wild wolf. After that she asked him to build her a castle of sheepdung, and in this way she stalled him for 27 years. Finally she had to submit and become the wife of the king of Hor.
it cannot be denied, for example, that all the way from eastern Tibet, the area known as Kham, all the way into Hunza, Nagar Baldistan, and perhaps even into Gilgit, there is a cultural continuum. There is a cultural continuum. The people, their symbols are similar, whether it be the prayer flag or whether it be the clothes that they wear and so forth. I was very interested. I mean, as you know, I'm building a house. Yeah. And we had sort of positioned the house, and the entry was going to be from the north. I was approached by the architect and said, listen, I don't think you should have the entry on the north, you should have it on the east. I was intrigued because the architect happened to be a Muslim. So finally then he said, no, it's not auspicious. So we've switched the entrance to the eastern entrance. And certainly there is nothing Islamic about that notion. I think it has to do more with the local culture. इसको हो गया जनाब जमीन के नीचे हमारे जबान में जनाब लालू लुटकिन आ गया है। अब लुटकिन जब आ गया तो लुटकिन की नाराजगी से शुरू से यानी जमीनी नीचे जो रहने वाले माहौल की उससे इसको तकलीफ हुआ, नाराजगी से तकलीफ हुआ है, जिस तकलीफ की इलाज जो है लामा साहब मतलब इलाज Having forgotten all about Ling, Kesar was in Dudial, the land of demons, living happily with the demon's wife, Bamsio Bumskid, and their baby daughter. Meanwhile, Aguda Pale, one of the 18 heroes, sent 2 birds in search of Kesar. The 2 birds reached Dudial. They found Kesar playing at dice with Bamsio Bumskid. Kesar heard the birds and looked up, and one of the birds dropped his excrement into Kesar's mouth. Kesar vomited, and with it came out some of the poison that Bamsio Bumskid had fed him. Some of Kesar's memory returned. He said to the birds, "O birds in the sky, you remind me of Ling. If you have good news, roll about on the white carpet which I am laying down for you, and eat fresh meat. If not, roll about on the black carpet and eat the flesh of carcasses." The birds went to the black carpet and ate the flesh of carcasses. As full memory was restored to him, Kesar was filled with anguish and wept bitter tears of regret. He put on his armor and lifted his sword. Then, along with Bamsio Bumskid and their daughter, Kesar got on to his divine horse, Kengjugnerpa, and rode on. Kengjugnerpa hated Bamsio Bumskid, for she had mistreated him and fed him rotten grass. So while crossing the deep waters, he suddenly swung around and threw her and the daughter back onto the shore. Bamsio Bumskid was enraged. She killed her daughter, threw the upper half at Kesar, and devoured the lower half. Kesar wept bitterly and built a stupa for his daughter.
Here, see, the old people of the Baltistan, see, they were also Buddhists, see. So they, after becoming a Muslim also, so they continued to relate this story. Did they make any changes in it? No, they didn't change it. No, it is so beautiful, you see, that the whole language, you see, and the manner of relating the story, and you see that you will see the whole picture, you see, coming before you, see. Yeah. So then what happened in Baltistan and other places, you see, then afterwards the religious people, you see, like say Agas and Sheikhs and Molvis, you see, they asked them to not to tell this story, not to sing these stories. Yeah. They long back, see, I met a young man and from Kargil, so we were traveling together, and I asked him, so why they stop them to relate this story? And then he was telling me, you know, and they say so that then the Kesar seems like God. That is why they don't like it. Tak yani kerana tantani tamroga norzgo chuzgo bazgo tama sazgo tama sunset pohogama kerana chargo şine verit ba ya amar yala çok güzel koy yani kerana Jake bay tums kuyran za jake wa jake zosada koy yani kerana tantan tamroga şerbi prola songloju çaçık pekana şarbanla za jüle hava ke kenti şadı şakol nga ta uta fetçik tan şikçi yani kendi gang vezer bana yani kerana roker bir rosna ker ama krutun ko bacha in mo kozes yani kerena yawa yani kerene kesar keran roker bir rosna ker dekana ama hazan çiza yani zama çumik to hazaca tumçi zer buna ya tazaca tumcana çitamat keran yani kerena çigasu आपका नाम क्या है? गुलाम अहमद ये मलिक ये आपने केसर कहाँ से सीखी? अपनी माँ से सीखा
दादा से सीखा। उन्होंने कहाँ से सीखा? क्या पता कहाँ से सीखा, वो तो हमको खबर नहीं है। अच्छा, तो द्रास में काफी लोग हैं जो केसर सुनाते हैं? काफ़ी है, कौन है काफ़ी, जितना ज़्यादा नहीं है इधर, वो गुजर गया जो सुनते वाले कहने वाला। कुछ लोग कहते हैं ये केसर सुनाना मना है, शरण है ना, हाँ? शरण है, हाँ। इस्लामी शरण में उसको तवज्जो देना गुनाह ही कहते हैं। वो ये है ना, काफिर है, दज्जाल है आखिर ज़माने की, इसलिए नहीं तो क्या करेगा आप सुनने। आपको नहीं लगता है कि आप कुछ गुनाह कर रहे हैं? क्या करेगा, खुदा बख्शने वाला, किसी ने शौक करके कहने से कहना भी चाहता है, कोई बुरा भला कुछ बात तो नहीं कहता है और दूसरों को और कुछ बात बकवास बात कहने से वही भी अच्छा है। Somebody has described it as being the most pervasive epic in Asia. We're not talking just about Tibet now or the Tibetan-speaking world. They talk about it as, and in many ways, yes, because you find it in so many. There's a version, for example, in Manchurian. There's a version, of course, in Mongolian. There are versions in Mongolian, Tibetan itself. Burushaski is another language which is Indo-Aryan, in fact, and that it's found to be it's to be found in that language. It's found to be in Lepcha as well, and of course many dialects of Tibetan itself. So it is a very pervasive epic. The Buddhicized version, for example, has texts, and it could also be called the textual versions, because the textual versions and the Buddhicized versions coincide, as it were. So and the incorporation of it in the Buddhicized versions is very much where the patron saint is Lord Padmasambhava or Guru Rinpoche, and there are many other characters who can be identified with Buddhist deities. I don't know if we could say that there are Muslim versions of it, but yes, as you were saying, there are Muslim bards who sing it. And I think the interesting thing about that is that the Muslim ones seem to be the most folkloristic. And my theory, and it's a very personal theory on that, is that the Muslim, once they start to chant or recite the Kesar, they feel that there is very little meeting point between it and Islam. And so they cannot adapt it, as it were, to Islam, and so they sing it as it as it is. And because of that, one of my theories is that it has been preserved in its fossilized form best in the Western Tibetan regions or the Western Tibetan speaking regions, where it so happens that Muslims are the ones who are singing it. क्या सोच के ना ये बताइए, आप कहानी सुना रहे हैं, आपके केसर की कहानी और वो जो ब्रोकर वाले सुनाते हैं उसमें कुछ फर्क है? फर्क है, इसी को लिया ना जो वहाँ फर्क है ना। उन्होंने बोलता है अपने ख्याल के साथ, मैं बोलता हूँ पुराने शेष के साथ। आप जो सुनाते हैं केसर, उसमें बुद्धिस्ट देवताओं का जिक्र है? बुद्धिस्ट का? हाँ। बुद्धिस्ट का जिक्र है। जिक्र तो ज्यादातर उनकी वो होता है, मजहब का ज्यादा होता है। सिर्फ एक पार्ट में मैंने बोला ना, आप एपिसोड उसमें है मुस्लिम का पूरा जिक्र है।
ज़्यादा सारे 17 पार्ट जो है उसमें बुद्धिस्ट का है। हाँ बुद्धिस्ट का है, सारे बुद्धिस्ट का। हाँ तो अपिसो में क्या है? अपिसो जो है ना वो मुस्लिम का है। वो इसमें ज्यादातर मुस्लिम का वो होता है अपिसो सिलसिला। खुद ही मुस्लिम है, मुस्लिम का बादशाह है, इसलिए मुस्लिम का हुकूमत करते थे, उसने मुस्लिम का काम किया था। 18 बादशाह में से एक बादशाह मुस्लिम, 17 बादशाह बुद्धिस्ट, इसलिए वो एक अपिसो भी उसमें शामिल है। इसलिए वो केसर से मिलकर अपिसो ने हुकूमत किया था, बादशाही फतह किया था, बहुत सारे गाँवों को उसने कब्जा किया था। वो तो आपको कहाँ पूरा बताया है, कहीं 8 घंटा लगेगा अगर पूरा कैसा सुनाए तो उसको अपिसो को। Soon the armies of the three realms gathered. The 18 heroes arrived with Agu de Pale at their head. The lamas, the singers, the smiths, the carpenters, boys skilled in the use of slings, girls skilled in the use of the spindle, those with horses and those with yaks, all marched with Kesar. After 7 days, Ane Kurman appeared. She told Kesar to send the Ling army back and proceed to Hor alone. Kesar knew the journey ahead would be hazardous. He felt unsure and helpless. He prayed to Ane Kurman, "O divine aunt, please protect me and be with me." आपकी उम्र कितनी? उम्र हो गया जी 65, 61 साल हो गया। तो मैं थे और 10-15 साल और रहूँगा, अगर नहीं रहे तो क्या पता। हाँ जी, वो तो हमें नहीं मालूम है, ऊपर वाला मालूम है। दुनिया में कहीं और भी केसर है? और केसर नहीं, एक ही। किसी और जगह पे भी केसर सुनाते हैं? केसर सुनाने वाले तो होगा शायद दुनिया में, वो तो होगा ना, हमने नहीं सुना। और यहाँ हिंदुस्तान में तो नहीं होगा, लद्दाख में होगा कोई 100 में से 1-2, और मुल्क में 100 में से 1-2 होगा, भोपाल में भी 100 में से 1-2 होगा। मगर आपको रिकॉर्डिंग पास करने वाले नहीं मिलेगा। 2-3 लिंग तो किसी ने भी बोलेगा, 100 में से 1-2 नहीं बोलेगा। नहीं, लद्दाख के बाहर कहीं और दुनिया में कहीं दुनिया और? में, हाँ दुनिया yang
ये दालू मुलुक मुलुक हमने नहीं सुना, वही बोलता हूँ मैं। चना में हो सकता है, चना भी शायद होगा, चना में होगा शायद, मुझे ना मालूम, नहीं सुना। आपने नहीं सुना। चना में ये गाने वाला है, नहीं सुना। चना में हम कौन पहुँचता है? केसर कहाँ का रहने वाला था? वो केसर है पहले लिंखा सरकू, मैंने बोला ना आपको, लिंखा सरकू जो है यहाँ एक कब्जा था पहले, एक 2, 3 या 5 घर वाला घर था, उसमें एक बूढ़ा और बूढ़ी था, उसको नहीं कैसा अभी क्या मगर लिंखा सरकू कहाँ पर है? लिंखा सरकू घर ये पिन लो। वो लिंखा सरकू पहले ज़माने में रिकॉर्ड का बोलता है ले है, बोलता है लद्दाख ले, लिंखा सरकू ले। होरियुल जो है, होरियुल दे दिया ना, होरियुल है यर्केन, और दूदुल है स्कर्दो, इसी तरह से। अच्छा। हाँ स्कर्दो है दूदुल, हाँ जी। टोयुल है जापान, हाँ टोयुल बोला है ना, हाँ जी। और बोला सोयुल है जी जर्मन, अहायुल है जी अपिसो का गीत आया ना, वो बोलता है इसी तरह है वो नागालैंड का वो भाषा का क्या नाम है, वो गांव का नाम नागालैंड है। वो आजकल के ज़माने में पहले बोलता था अहायुल अपिसो के, क्यों आदमी का गोश्त खाने वाला था सारा ही, अभी नागालैंड में भी हो है बोलता है। Kesar disguised himself as a smith's son and remained in Hor. One day, the king of Hor held a competition for the warriors of Hor. They had to bend the famous bow which he had seized from Ling. All the warriors tried, but none could lift it. Kesar, still disguised as a smith's son, lifted the bow and bent it in such a way that it broke, and the bowstring caught the king's neck, who was almost choked. The next morning before sunrise, in full armor, Kesar climbed into the palace. The king of Hor and Duguma were stunned to see Kesar standing before them in all his glory. I am Kesar, king of Ling. You have destroyed my country, married my wife, killed my friends. My subjects you have enslaved, and my possessions you now enjoy. I am here to take back what is mine and to destroy you. Duguma was distraught. At that moment, both men meant the same to her. One she had chosen, and the other had fathered her son. Kesar killed the king of Hor. He destroyed the king of Hor's possessions and started on his journey back to Ling, taking Duguma with him. On the banks of the river Indus are some 5 villages inhabited by the Brokpas. The Brokpas are supposed to be pure Aryans. Some say they are the descendants of Alexander's Greek army. They are recent converts to Buddhism, and although their ethnicity and language is quite different from the rest of Ladakh, Kesar is equally popular here.
Telepaterun khaju or jesa yeskali boya chinare chu stati chonto khutu ki stati the ipan to terun khaju nurbu gamari ju raskal pain shazebe to ratse karmode ethe de pa boya chu nadun tin ashute patera sauga chuchun bar sina amshit buskal po amshit danias man po amshit jo he o ya tera amshit I'm sure they got my jamata to who is what. केसर का कहानी जनाब हमारा बाप का पास था मैं बाप के साथ चलते थे पहाड़ में हम बकरे के साथ रहते थे उस वक्त बाप रात को गाते थे ऐसे होते लड़का ऐसे होते बोलते थे बाप से मैंने इंटरव्यू करके बाप से मैंने सीख लिया जनाब और किसी से नहीं दाएं बाएं से। तो ये कितने साल पहले की बात है? ये कम से कम मैं छोटा 8-10 साल से बाप का साथ बैठा मैं 20-25 साल तक मैंने क्लियर किया इसको। अभी हमारा 55 है जहाँ आजकल सीखना मुश्किल है तो आपको कोशिश करता हूँ अपना 2 पोते हैं उनको लिए मैं सीखना कोशिश करता हूँ मगर उसमें खजमत पर है कि नहीं आएगा कि नहीं। सर्दी का मौसम में ज़्यादा चलते हैं ये बिला होते हैं ना रात लंबा होते सर्दी के मौसम में ज़्यादा चलते हैं। लड़कियों को ये ऊन करना होता है उसका धागा बनाना और लड़का लोग का चमड़ा नरम करना और जो बकरी के बाल है उसको बनाना रस्सी बनाने के लिए तो टाइम गुजार करके उन लोग रात को 2-3 बजे तक हिसाब आजकल तो गाड़ी की बात करते हैं उन लोग तो पहले तो तारा गिनते थे आजकल तो जो जल्दी जल्दी सोचे थे एकदम फिर भी हमको रोना आता है कभी कभी ये याद आकर बहुत दुख हो जाता है। आजकल आदमी नहीं होते इससे बड़ा कोट पहनता है 100-150 1000-2000 का मगर उसमें कोई फायदा नहीं ना। अपना देश का भी अपना गाँव का भी रस्म रिवाज रखना चाहिए था वो रखता नहीं जनाब क्या करें मुश्किल है। In Ling, Dugama was made to live in a tent. She was given the hardest of tasks to do. She endured this for many, many days. Then one day she came to Kesar and said, I did not go with the King of War willingly. It was 3 years after you left that the King of War invaded and destroyed Ling. He came to take me, and I stalled him for 27 years. There was no sign of you. Finally, I had no choice but to go with him. Where had you been sleeping all the time? On hearing this, Kesar was filled with remorse. Oh, dear companion, true love has proved fragile, and passing love so disastrous and compelling. It divides us and keeps us apart, but both of us utterly share its sorrow and pain. And he took Dugama's hand, and together they went to the Ling castle, where she was restored as the queen of the land. आपको हर चीज में याददाश्त अच्छी है कि सिर्फ केसर की कहानी में? वो केसर हर चीज़ तो क्या होता है उसके बाद कुछ नहीं है। और जैसे रोजमर्रा की चीजें होती हैं आपको याद रहती हैं? वो तो रहता है वो तो रहता है। मैं बचपन 8 साल से जो हमने क्या किया उसका याद है। हाँ पूरा याद।
8 साल से माँ के दूध पीने का मुझे याद है। मैंने माँ के दूध पिया था, इस वक्त हमको याद है 1.5 साल को हमने इसके दूध कभी कभी पीता है, कभी दूध को ख़राब समझता है, इस तरह से क्या ना वो निकाल देता था। हाँ, सिर्फ 1.5 साल से ज़्यादा नहीं पिया था हमने दूध। वो सब याद है? हाँ जी, वो मुझे याद है। तो कैसे आपको इतनी याददाश्त? वो याद हमारा अल्लाह ने आपको दिमाग रख किया तो याद रहेगा ना। क्या बोल क्या कल बात की बात नहीं थी। मुझे तो कल की बात याद नहीं रहती। वो कोई आएगा ना, कोई किसी को परसों क्या खाया, परसों क्या किया, उसका याद नहीं रहेगा। कोई इंसान का कोई कई किस्म का होता है इंसान। हाँ जी, 100 में से बोलता है, 100 में से 10% इंसान होता है, दूसरा और किस्म का होता है भी बोलता है हमारे ज़बान। हाँ, कोई लुम्बड़ी का दिमाग, कोई भेड़िया का दिमाग, कोई चीता उसी तरह से आता है। कोई होता है चिड़िया और या क्या नाम कबूतर बोलता है, कौवा बोलता है, बहुत सारे हैं ना, उनका अक्ल होता है बोलता है। वो बुद्धिस्ट की किताब में भी है, हमारी किताब में भी है। आपको जाफर, हाँ जी, अब कभी अप्पी के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ है कुछ? वो थोड़ा बहुत होता है। अच्छा? हाँ, थोड़ा बहुत होता है। अभी हम बुजुर्ग होने पर इन्होंने ज़रा दुखा करता है ना, कभी कभी मेरे बात को नहीं मानता है तो मैंने तो कुछ बात बोलना चाहिए। अगर मेरी बात को नहीं माने तो मैंने भी थोड़ा ज़बरदस्ती से बात बोलना चाहिए ना, तो उन्होंने डांडा उठा के मारता है। आज डंडा उठा के मारता? हाँ, डंडा उठा के मारता है। अप्पी क्या इसको डंडा उठा के मारते हो? चिलो हाँ बेरगा ना बेरगा थोड़ा बेरगा मैंने मुल्क अगर डंडा नहीं मिले तो इस मुट्ठी से मारता है बोलता है ना। हाँ तेरा आवाज़ खांग मैंने बेरगा तनो मैंने ले लिया। अभी वक्त हो गया, क्या करेगा? अगर नहीं ये जवानी वक्त में होता तो अगर इन डंडा से मारे तो मैं फॉलो करके दे दूंगा किसी न किसी को। मैं कहाँ मैं कहता बोलता है फॉलो मैं करूँगा, ये क्या करेगा? क्योंकि ये मेरा घर है बस। Ja. Pale goto ko niya to biana go kurna gote go kur kan po pale to dilas gani ka margal kan po nganmo nanga limpa go lagwa ta de la se ju azar bana awni se ju tas pa kena sas bertan na sa tap tun tap ta ju las gani kena las be tun thale se ju chani skat purang solorena butaji lix pari so alabang da thang so ta tholo molang tanas muluk chen chi tulum se da som so lai tholo molang onas muluk chen chi tulum se das mux pa zelernarik sunangalangi ran kyun chi ga so lai mux